चलो लास्ट लेक्चर में मैंने जो तुम लोग को बड़ा असाइनमेंट दिया था वो तुम लोग ने किया होमवर्क. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग that exercise, we are going to start today with a new concept which has been based upon quantifier and quantified statements. Quantifier and quantified statements. So here there are two terminologies that we are going to study. One which is called to be as quantifiers and other is called to be as a quantified statement. So before we proceed with this term, चलो मुझे फटाफट सब लोग बड़ा आंसर दो कि which of the sentences they are not considered to be as the statements of logic. Correct. The sentences which are interrogative, the sentences which are interrogative, comma, imperative, comma, exclamatory, comma, suggestive, and the last one was open sentence. बरोबर है? Open sentence. That type of sentences, they are not being considered to be as the statement of logic. Tell me, what do you mean by the term open sentence? What do you mean by the term open sentence? Open sentence क्या होता है मुझे बताओ. Correct. Very good. Incomplete sentence. है ना? Incomplete sentence is called to be as open sentence. बराबर. So we can say that okay, open sentence which is not considered to be as the statement of logic, which is not considered to be as the statement of logic, but we can convert this open sentence, into a statement of logic, by using the phrases, phrases like for all, for every, there exists at least one. The phrases which are being used for converting an open sentence, into a statement of logic, is called to be as quantifiers. What it is called to be as a quantifiers. समझा? तो quantifiers जो है वो quantifiers क्या होते हैं तुम लोग को समझ में आ गया? एक बार फिर से चलो रिकॉल करो. What are quantifiers? Quantifiers, they are the phrases which are being used for converting an open sentence into a statement of logic. They are being called to be as quantifiers. What they are being called to be as? Quantifiers. In this given chapter, but we are going to study about the two important types of quantifier, and the two important types of quantifier which we are going to study, they are
You can see on your screen, bro. One which is called to be as universal quantifier. One which is called to be as universal quantifier, and number two which is called to be as existential quantifier. Quantifiers, they are of two types. Quantifiers, they are of two types. And which are the two types of quantifiers? मुझे बताओ. Number one, which is called to be as universal quantifier. Number one, universal quantifier. And number two, which is called to be as existential quantifier. Existential quantifier. तब ये quantifiers क्या होते हैं मैं तुम लोग को यहाँ पे बताता हूँ. ये देखो, starting with number one, which is called to be as universal quantifier. Universal quantifier. For universal quantifier, ये देखो, whenever we use the phrases like, whenever we use the phrases like, for all, or for every, whenever we use the phrases like for all or for every, for converting an open sentence into a statement of logic, so we call such type of quantifiers to be as a universal quantifier. We call such type of quantifiers to be as a universal quantifier. And for representing universal quantifier, this universal quantifier, it is been denoted, it is been denoted by using ulta a. It has been denoted by using ulta a. अच्छा, when I am using this term उल्टा ए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी उसे उल्टा ए ऐसा रीड करो. This will be read as either for all or it will be read as for every. कैसे रीड किया जाएगा बेटा उसे? For all or for every, है ना? Out of the two, ये we will prefer the first one. है ना? We will prefer the first one which is called to be as for all. तो ये जो बड़ा मैंने तुम लोग को सिंबल बताया उल्टा ए, बच्चा तुम लोग उसे रीड कैसे करोगे? क्या तुम लोग उसे उल्टा ए ऐसे रीड करोगे? नो, दिस विल बी रीड एज फॉर ऑल. दिस विल बी रीड एज फॉर ऑल. बराबर है? अच्छा, नाउ देयर कम्स existential quantifier. Existential quantifier. So when we talk about existential quantifier, ठीक, whenever we use the phrases, whenever we use the phrases like here, there exist or here, or there exist
or there exist at least one. There exists at least one. बरोबर. There exists or there exists at least one for converting an open sentence into a statement of logic it is being called to be as existential quantifier, and existential quantifier it is been denoted by उल्टा ई. बट तुम लोग यहाँ पे बड़ा उसे उल्टा ई रीड नहीं करोगे बड़ा. आउट ऑफ दिस टू नहीं बड़ा. We will prefer first there exist. समझ में आया तुम लोग को? You will be preferring there exist. सबको समझ में आया? क्वांटिफायर्स क्या होते हैं ये सब लोग को समझा? What is the main purpose of studying quantifiers? To convert an open sentence into a statement of logic. चलो next. After this, we are going to start with the next term, which is called to be as quantified statement. Quantified statement. By what are quantified statements? An an open sentence. An open sentence with a quantifier. An open sentence with a quantifier. It becomes a statement. It becomes a statement, and such type of statements they are being called to be as a quantified statement. तो इसका मतलब ये हुआ बड़ा कि विद एन ओपन सेंटेंस चाहे कोई भी क्वांटिफायर हो, कोई भी, whether it is a universal or whether it is existential, whether it is universal or whether it is existential, कोई भी क्वांटिफायर हो, कोई भी का मतलब कोई भी हो, that type of open sentence with a quantifier it is being called to be as a quantified statement. It is being called to be as a quantified statement. And remember that all that quantified statements they are being considered to be as the statement of logic. Acha, kyun? Why it will become a statement of logic? Because by using a quantifier, that given sentence either it will become a true or it will become either it become a true or it will become false. And since it will become either a true or false, therefore it is being considered to be as a statement. It's being considered to be as a statement. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान.
इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट Yes, तैयारी का a साथ। statement of logic, a statement of logic. So here I've explained you the two important concepts. पहला जो मैंने तुम लोग को explain किया था, that was based upon a quantifier, and second, which I've explained, it was based upon a quantified statement. It was based upon a quantified statement. So in exercise number 1.5, 1.5 exercise में आ जाओ 1.5. In exercise number 1.5, here you go. We'll start with the main question number 2. If B is a set, सब लोग बराबर ध्यान से सुनो बड़ा. If B is a set, if B is a set which is comprising of 2, 3, 5, 6, 7, if B is a set which is comprising of 2, 3, 5, 6, 7, determine the truth value of each of the following. Determine the truth value of each of the following. दो एग्जाम्पल्स जो है ना बड़ा, दो एग्जाम्पल्स बच्चाओ सब लोग तुम लोग ध्यान से देखना और तुम लोग समझना. इनकेस अगर कोई डाउट है तो फिर तुम लोग मुझे डाउट पूछना होगा, ठीक है. अब ये केस में ये देखो, what is the first question? The first question it states that for all the values of x, ये देखो for all का मतलब सब के सब, for all का मतलब बड़ा सब के सब, for all the values of x which belongs to b such that x is a prime number. X is a prime number. अब जो मैं बताने वाला उसके ऊपर ध्यान दो. यहाँ पे जो क्वांटिफायर यूज हुआ है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हुआ है बिकॉज इट इज स्टेटिंग दैट फॉर ऑल. बराबर. अच्छा, अगर बी के अंदर बड़ा जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स बड़ा, अगर वो सबके सब अगर वो प्राइम नंबर्स हुए ना बड़ा, सबके सब अगर वो प्राइम नंबर्स हुए तो समझ जाओ कि योर गिवन सेंटेंस इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू बड़ा इट विल बी अ कैपिटल टी. बराबर. बट अगर एक भी वैल्यू अगर मुझे ऐसा मिला, कोई भी एक भी वैल्यू बड़ा कि वो प्राइम नंबर नहीं है बड़ा, तो समझ जाओ कि द गिवन स्टेटमेंट विल बिकम अ फॉल्स. द गिवन स्टेटमेंट विल बिकम अ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिफायर यूज हुआ है बड़ा वो यूज हुआ है फॉर ऑल. बराबर. तो एक एक करके तुम लोग सब लोग मुझे आंसर देने की ट्राई करो. सबसे पहला है बेटा 2. 2 इज अ प्राइम नंबर. टेल मी यस और नो. टाइप करो y और n. यस, इट इज अ प्राइम नंबर. चल भाई 2 ने तो सेटिस्फाई कर दिया. 3 इज अ प्राइम नंबर. यस. 5 इज अ प्राइम नंबर. अच्छा. 7 इज अ प्राइम नंबर. 7.
अच्छा, so what about 6? What about 6? 6 is a prime number. Oh shit यार, 6 is not a prime number. यानी ये 6 के वजह से ये गिवन सेंटेंस जो है क्या बन गया? फॉल्स बन गया, बराबर है। क्यों फॉल्स बना पता चला तुम लोग को? रीजन पता चला? क्योंकि यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्वांटिफायर उसने क्या यूज किया था? फॉर ऑल। तो यू राइट डाउन द आंसर एज बेटा, फर्स्ट आंसर लिखो, राइट डाउन द फर्स्ट आंसर। द गिवन सेंटेंस इज फॉल्स। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, तुम लोग आंसर लिखो बेटा। द गिवन सेंटेंस is false. The given sentence बेटा is false. अच्छा, false किसके वजह से बना बेटा? For x is equal to, for x is equal to 6. Next line. Therefore, therefore, the truth value of the given statement is, the truth value of the given statement is, अच्छा बताओ, what is the truth value of the given statement? Is capital F. अच्छा, अब यहाँ पे बच्चा लोग ये देखो कि सपोज यहाँ पे फॉर ऑल नहीं बेटा, देयर एग्जिस्ट अगर होता ना बेटा, देयर एग्जिस्ट मीन्स कम से कम एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए था बेटा, तो फिर ये गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाता? ट्रू हो जाता, बराबर है। बट यहाँ पे बेटा वो लोग ने देयर एग्जिस्ट नहीं, यहाँ पे क्या यूज किया था वो लोग ने? फॉर ऑल। चलो अब सेकेंड देखो बेटा, सेकेंड, there exists n which belongs to B such that n plus 6 is greater than 12. अब बच्चा लोग ये देखो, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्वांटिफायर जो यूज किया गया है वो एग्जिस्टेंशियल है, बराबर है। अच्छा, एग्जिस्टेंशियल है इसका मतलब कम से कम, कम से कम मुझे ऐसा एक नंबर जो है वो बी में से मिलना चाहिए जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कम से कम अगर मुझे एक नंबर मिल गया जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, तो योर स्टेटमेंट विल बी ट्रू, बराबर। और अगर एक भी नहीं मिला बेटा, एक भी अगर नहीं मिला तो स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 + 6 8, 8 इज ग्रेटर देन 12, नो, नहीं कर रहा है। 3 + 6 9, 9 इज ग्रेटर देन 12, नो। 5 + 6 11, 11 is greater than 12, no. 6 + 6 12 is greater than 12, no. 7 + 6 7 + 6 13, 13 is greater than 12, oh yes। चलो कम से कम एक नंबर तो मिल गया बेटा, कम से कम एक नंबर मिल गया भाई। एक नंबर मिल गया तो क्या लगता है? द गिवन सेंटेंस इज अ ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉर एक्स इज इक्वल टू, यस, फॉर एक्स इज इक्वल टू बड़ा विच वैल्यू? यहाँ पे सॉरी, एन का वैल्यू कौन है बड़ा? 7। तो यू कैन राइट डाउन, you can write down the given sentence is, the given sentence is true
for n is equal to 7, for n is equal to 7. Next one, bro. Therefore, the truth value of the given statement is capital T. Next, there exists n which belongs to B such that 2n plus 2 is less than 4. बड़ा कम से कम मुझे बी में से ऐसा एक नंबर तो मिलना चाहिए, एक नंबर तो मिलना चाहिए जो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो. चलो भाई चेक करो, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट. एन का वैल्यू 2, 2 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 इज लेस देन 4 नहीं. अरे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है बड़ा वो ही ये गिवन कंडीशन को बड़ा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो क्या उसके आगे 3, 5, 6, 7 क्या ये सब उसको सेटिस्फाई करेंगे? नहीं करेंगे बेटा. तो क्या लगता है, क्या लगता है? द गिवन सेंटेंस इज false the given sentence is false for n is equal to 2, 3, 5, 6, 7. Therefore, the truth value of the given sentence, the truth value of the given statement is the truth value of the given statement is false. Next, A, for all the values of y which belongs to B such that y square is negative, for all the values of y which belongs to B, y square is negative. बड़ा तुम्हें क्या लगता है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बड़ा वेदर इट विल बी नेगेटिव? कोई भी नंबर का स्क्वायर जो है क्या वो नेगेटिव आएगा? तो क्या लगता है बेटा द गिवन सेंटेंस इज अ ट्रू और फॉल्स? राइट बेटा द गिवन सेंटेंस is a false for y is equal to 2, 3, 5, 6, 7. Next line. Therefore,